Hello students, in this video I will tell you about again the complex number. Some more videos I have made on this topic, complex number of class 11 understanding ISC mathematics by M.L. Agrawal. So exercise 5.1 of the complex number I have finished. And now the exercise 5.2 and 5.3. 5.2 basically based on the triangle inequality, and but in this year, especially in 2020-21, this triangle inequality is not in your syllabus, but using distance formula you can solve it. Some question in exercise 5.2. There are the 4 questions, so you can solve by using the distance formula. Now, what is the distance formula and what do you mean by using the distance formula? If you have a complex number x plus iy like this, then this x and y belongs to real number, as you know, belongs to real number. And in the graph paper, if you want to plot, so you can plot the one complex number like this. And if you have the other complex number x1 plus iy1, then you can plot like this, x1 comma y1. So these are the coordinates of the point on the graph paper that you can plot, and this is called organed plane. ये graph paper नाम नहीं है, इसमें कहा जाता है कि you plot the complex number on the organed plane. तो ये x, y है, and now you can use the distance formula, the same distance formula, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, and then you can solve the given questions. This is for the first question. Second question, using written also, using distance formula, prove that the points form the vertices of an equilateral triangle. तो equilateral triangle इसका मतलब कि ये all the distances must be equal using distance formula, and using this as second to prove that the points are collinear. तो collinear means the distance. Suppose the question number 2 minus exercise 5.2. Minus 2 plus 3i, comma, minus 1 plus 2i, comma, 5 minus 4i. These 3 points you have to show these are collinear. So how to show the collinear? Using distance formula. First you let the coordinates x1 comma y1, that is a point, means a minus 2 comma 3. Using this, a means x1 means minus 2 and b means 3. Similarly, b point x2 comma y2, and this is the point minus 1 comma 2, and c point 5 comma minus 4 x3 comma minus y3, and this is the 5 comma minus 4. Now find the distance a to b and write one time only distance formula and then do directly. एक बार लिखना है distance formula. अब ये distance हमारे निकल आई a to b, तो minus 2 plus 1 whole square, 3 minus 2 whole square, and this will be minus 1 whole square. 1 plus 1 means is equal to under root. This is the distance AB. Similarly, distance BC. BC is equal to minus 1 minus 5 and plus 2 plus 4 whole square. So it will be BC is equal to 36 plus 36 means 72. And under root 72 you can write as 6 root 2. So this is the BC. And thereafter the AC
A to C, AC is equal to -2 -5 +3 +4, and then you will get 49 or +49 means 98, and 98 you can write as 7√2. This is the AC. And do you know what is collinear? Yes, collinear I told also in the class 10. Collinear means in the earlier video also, if the 3 points lie on the same line, then the points are collinear. And how to show that? By using distance formula. Suppose A point, B point, C point. If the sum of the two, the distances of sum of two is equal to the distance of the third, means A to C. अगर ये equal है AB plus BC is equal to AC, then you will say that the points are collinear. Now check whether the distances are equal or not. As AB is √2, BC is 6√2. AB and plus BC, so √2 plus 6√2. This is equal to 7√2 means AC. It is proved. So therefore, by using the distance formula, you can show. To other questions also, if there is square and other things, you can show. What I have to tell you that about the polar form of the representation, polar form of the complex number. What is the meaning of the polar form? This is in exercise 5.3, and this is very important also. What is the polar form? Of complex number. As you know, the z is x plus I1. This is the complex number. And if you want to represent on the organ plane, in the graph paper, for the x comma y you can represent. But what is the angle from the origin, from the x-axis? This, how will you know the angle? Angle means, first of all, we will let the x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta in this case. Then square these two, you will get r square cos square theta, r square sin square theta, and add, so you will have cos square theta plus sin square theta. So this is the first relation that we can say the value of r is √ x square plus y square. Have you seen this type of √ x square plus y square? Yes. Modulus. Modulus of the complex number is the same. Means r, you will say this is the modulus of the complex number. It gives the only positive value. And what is theta? If you divide the equation 2 by equation 1, divide equation 2 by 1. So what you will get? Y upon x is equal to r sin theta upon r cos theta. R cancel, so tan theta is equal to y by x, and this theta you can write as tan को उधर ले जाए तो उसके ऊपर पावर -1 लग जाता है, और इसको बोलते हैं tan इनवर्स y by x. This is the angle between the 2 points, मतलब x और y के बीच का जो angle है कॉम्प्लेक्स नंबर में, that is tan inverse y by x, where we will represent on the organ plane.
this point P means x plus iy, so x comma y is the point P, and this px comma y. If we join this point P with the origin, then this angle is the theta. This is the theta, and this is the r. Thereafter, if you have the angle, not only the positive angle, maybe the negative angle. If you have the negative angle, then this will be here, and this is the minus theta. In the anti-clockwise direction from here to here, it will be the positive, and from here to here it will be the negative, and this plus theta and minus theta will be lie between ये सिर्फ और सिर्फ माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करेगा. मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अगर हमें थीटा निकालना है तो यू विल हैव ओनली रेंज बिटवीन माइनस पाई टू पाई. दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. हम इस को थीटा को यहां से यहां नहीं ला सकते. इफ यू हैव टू टेक इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन यू विल गो फ्रॉम हियर. अगर तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू मोर देन 180 डिग्री है, तो यू शुड कन्वर्ट लेस देन 180 डिग्री, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द थीटा माइनस पाई टू पाई. So what is polar form? Polar form is the form in which you will represent the complex number in terms of their angle. मतलब quadrant के हिसाब से angle and the value of r. So the polar form is the r cos theta or y is equal to r sin theta. If so, z will be r cos theta plus I r sin theta. Then z will be r is common, cos theta plus I sin theta. This is the polar form of the complex number, where theta lies between minus pi to pi, r की value under root x square plus y square according to question, and these two theta will be same in one question. The sign will be with I only, means imaginary value you can say, and the cos theta will be the that value real value. तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. साइन थीटा हमेशा I के साथ होगा और cos थीटा हमेशा. In some question, suppose you have sin theta here and cos theta here, so you have to change cos theta in the sin theta and sin theta in the cos theta by using the formula cos 90 minus theta and sin 90 minus theta. Now, according to this, ये जो थीटा आता है, this theta is known as amplitude of the complex number या argument भी कहते हैं. ARG, argument of complex number will be tan inverse y by x. This is called argument. और यही argument की वैल्यू को हम थीटा बोलते हैं. इसी को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. मॉडुलस इज अनदर थिंग, conjugate is another thing, but amplitude and argument both are the same. तो ये argument है of the complex number. बट आर्गुमेंट में ध्यान देना है कि माइनस पाई से पाई के बीच में ही आंसर होगा और आगे या पीछे नहीं. Now, how to find the questions solution of the given question in the exercise 5.3? You have to, the questions in the form you have to represent in the x plus iy form or represent in the polar form. Or find the arguments, find the modulus, like this you have to. Question number 1. If z is a complex number, state true or false. Argument of z is defined if z is not equal to 0. True है कि false? Z is not equal to 0. Z कब 0 होगा?
you will get z is equal to when both are 0. तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या डिफाइंड होगा, मतलब tan इनवर्स y by x, y x दोनों 0, both are 0, it will not be defined. तो फर्स्ट इज फॉल्स. आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, वो 0 होगा इफ एंड ओनली इफ z इज ए पॉजिटिव रियल नंबर. आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 if and only if z is a positive real number. पॉजिटिव रियल नंबर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जैसे z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई है, तो पॉजिटिव रियल नंबर ये हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, ये पार्ट होना ही नहीं चाहिए. तो z की वैल्यू मतलब आर्गुमेंट ऑफ z हम कह सकते हैं, तो ये tan इनवर्स y बाई x होता है. तो y इज 0, अब x की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, लेकिन जो tan हमारा 0 और भी होता है, जो मतलब कि y की वैल्यू तो 0 होगी, इस केस में भी 0 आएगा. लेकिन अगर ओनली लिखा है तो फिर इसमें थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा कि tan के और एंगल पे भी ये 0 होता है, लेकिन पाई से ऊपर जाना नहीं. दैट इज व्हाई दिस इज द ट्रू. तो सिमिलरली यू कैन डू द क्वेश्चंस. Second question represents the complex number in the standard form x plus iy. Only you put the value. जैसे question number 2, 3 cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. You have to change in x plus iy form. So 3 pi by 2 it will be 270 cos 270 डिग्री, I sin 270. हमने बताया कि ये इतनी वैल्यू हो ही नहीं सकती, माइनस पाई से पाई, एंड दिस इज मोर देन पाई. तो चेंज इन द टर्म्स ऑफ पाई आर लेस देन पाई. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos, लेकिन दोनों को चेंज करना पड़ेगा. cos, अच्छा पाई में ही चेंज करें तो हाउ टू ब्रेक 3 पाई बाई 2, यू कैन राइट एज पाई माइनस pi, it will be pi plus pi by 2, 2 pi 3 by 2, yes, pi plus pi by 2. अब ये pi plus 3 pi by 2 को हम pi plus pi by 2 लिख सकते हैं. तो cos pi plus pi by 2 what you will get, minus cos pi by 2. तो ये cos, ये जो minus 180 होता है, तो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. और इसी के साथ में अगर हम इसको चेंज करें साइन को भी, तो ये फर्स्ट यू विल राइट दिस वन एंड I sin pi प्लस pi by 2. So it will be minus cos pi by 2 and प्लस, अच्छा ये भी माइनस में होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 2. दिस माइनस यू कैन टेक कॉमन, सो इट विल बी cos पाई बाई 2 प्लस I sin पाई बाई 2. ऑलवेज इन द फॉर्म cos थीटा प्लस I sin थीटा. अब ये माइनस 3 cos पाई बाई 2 यू नो दैट इज 0 एंड प्लस sin पाई बाई 2 दैट इज 1. तो 0 प्लस I, दिस इज द फॉर्म, मीन्स 0 minus 3i you can get. So this is the answer of the question number 2. Similarly, other question number 4, convert into the polar form. जैसे minus 1 plus I root 3 है. Fourth question, minus 1 plus I root 3, convert into the polar form. इसी केस में तुमको ये ध्यान रखना है कि थीटा मस्ट बी माइनस पाई टू पाई जब हम थीटा निकालें. तो सबसे पहले लेट माइनस 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, हमने बताया था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y मीन्स रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सो व्हाट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 3 दैट इज 2 you will get. Now the theta will be tan inverse y by x. अब theta is equal to tan inverse y means y you have root 3
and minus 1. So minus root 3. Tan inverse minus root 3. This tan inverse minus root 3 हमें लेना है कि ये माइनस पाई से पाई, तो थीटा अगर इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, यू विल गेट माइनस पाई बाई 3 मीन्स माइनस 60 डिग्री. द वैल्यू ऑफ दिस tan inverse is minus 60 degree. So minus pi by 3 you will put in place of theta and in place of r you will put the 2 and write in the form z is equal to r cos theta plus I sin theta. So r will be 2 cos minus pi by 3 plus I sin minus pi by 3. This is the answer. You will not write like this cos pi by 3 plus I sin minus pi by 3. दोनों same होंगे. So this is the method to do the questions. And if you want to find the modulus and amplitude, so what is amplitude? Amplitude is this. जब हम थीटा निकालते हैं तो ये एम्पलीट्यूड हो गया. अब जब हम थीटा ये आर निकाल रहे हैं तो दिस इज द मॉडुलस. तो क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो यू कैन डू. एंड इन 6 कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है पहले हमें a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई फॉर्म में चाहिए. तो ऑल क्वेश्चंस यू विल चेंज इनटू द x प्लस आई वाई फॉर्म एंड देन लाइक एक्सरसाइज 1 and then change, use apply this method, you will get in polar form. So do these questions, you will get the knowledge of the polar form representation of the complex number. Thank you.